Dear boys and girls, today we are doing for the competitive examination. This section is one of the most essential section for the future prospect for CSS, M.Cat, E.Cat and rest of the other competitive examination. So let us start. The first one. We are doing correction of errors. We have five options. Option A, option B, option C, option D and option E. इनमें अगर ये सारा सेंटेंस सही है तो आपने ई को टिक करना है, लेकिन अगर ए बी सी या डी में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आपने उसको सही करना है. तो चलें फिर हम इसको करते हैं. Politicians habitually promised to implement many profound changes if they are elected. B. Is that clear? Semicolon. Unfortunately, dash or fortunately, comma, depending upon one's, is that clear? Perspective. Dash only some of these promises is ever actually kept and no error. So A, B, C, D, E. अब हमने देखना है इसमें एरर कहाँ पर है. सबसे पहले तो हमने देखना है कि इसमें प्रॉब्लम है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की. ये याद रखिए कि सम जो है इट कैन बी यूज एज ए सिंगुलर एंड प्लूरल. Some can be used as a singular and as a plural. The thing is, it depends on who or what refer to. किसको हम रेफर कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, तो चले फिर हम करते हैं. इसका आंसर फिर बनेगा Politicians habitually promise to option A implement many profound changes if they are elected, semicolon. B, unfortunately, dash or fortunately, comma, depending on one's perspective, dash, only some of these promises are. Over here, some is trying to refer to promises. If some is trying to refer to promises, तो डेफिनेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव वर्ब है वो आर में बदल जाएगा. तो इज़ की जगह आर आएगा. ये डी इज़ अवर आंसर. डी शुड बी अवर आंसर. तो चले फिर हम आगे निकलते हैं. अगला हमारा है नंबर 2, बी. इज दैट क्लियर? The world was surprised when Roland Amundsen reached option A, the South Pole just day before Robert Scott arrived option B, because they option C had set out for the Antarctic फॉर अर्लियर. तो 5 ऑप्शन है. अब इसमें मसला ये है, ये जो सी है इट इज़ एम्बिगुअस, इट इज़ यूजलेस, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्राइंग टू रेफर टू एनी नाउन और प्रोनाउन. सो दैट्स वाई वी शुड ट्राई टू डिलीट दे. दे इज एम्बिगुअस ओवर हियर, यूजलेस ओवर हियर. सो हमने इसको हटा देंगे. तो चले फिर हमारा नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट नंबर 3. इज दैट क्लियर? Rolf
Yeah, now it is visible. Rolf Jacobson, Rolf Jacobson, like former politicizer, prize winner Lizel Müller, comma, is a gifted writer B, but it's C clear that Müller is the better poet D and E. नाउ अगर आप इसको गौर से देखें तो ये सारे का सारा सेंटेंस जो है वो सही है, तो ई इज़ आवर आंसर, ई शुड बी आवर आंसर। तो चले फिर हम अगला करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम। ठीक हो गया। अब नंबर फोर है डिजायरस फॉर ऑप्शन ए फूड, कामा द ग्लोइंग warm in Tiana's darkest case, use option B, use up B bioluminescence to lure C unsuspecting insect into sticky traps, option D, और देन ऑप्शन ई। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो ये पहला जो है डिज़ायरस फॉर, ये प्रपोजिशन की एरर है, डिक्शन एरर है, ये आएगा डिज़ायरस ऑफ। तो ए इज़ अवर आंसर, ए शुड बी अवर आंसर। तो चले फिर हम अगला करते हैं, नंबर 5। नाउ वी मूव टू नंबर 5। इज दैट क्लियर? वी मूव टू नंबर 5। तो चले फिर हम करते हैं द इफेक्ट, ऑप्शन ए, ऑफ द इकोनॉमिक downturn on the state of health care will, option B, not be known, option C, for some time, option D, and ऑप्शन ई, नो एरर। तो 5 ऑप्शन है हमारे। नाउ विच शुड बी आवर आंसर? इसमें डिक्शन एरर है, और डिक्शन एरर में जो ए है, AFFECT, ये नाउन है, इसका मतलब इमोशन और फीलिंग। तो दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आएगा ई वाला, इफेक्ट, जिसका मतलब है रिजल्ट। इज दैट क्लियर? जिसका मतलब है रिजल्ट, ये वर्ब है। तो ए इज अवर आंसर, ए शुड बी अवर आंसर। तो चले फिर हम अगला करते हैं, नेक्स्ट। वी आर डूइंग द नेक्स्ट वन। When Irth Wharton, acclaimed author of option A, The House of Mirth and Athen from, decided to take a break from option B, writing after completing option C, her 8th novel, she left her home in New York and is that clear? Is vacationing in option D, in the south of France। अब नो एरर। तो इसमें हमारे 5 ऑप्शन है। इसमें प्रॉब्लम है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की। इफ़ द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर, इट्स ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर। इफ़ द सब्जेक्ट इज इन द पास्ट, इट्स ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द पास्ट। यहाँ पर दूसरी लाइन में है डिसाइडेड। अगर दूसरी लाइन में डिसाइडेड है, इट मीन ये पास्ट टेंस है। अगर ये पास्ट टेंस है तो जो हमारा आंसर फिर बनेगा ये है डी, इज वोकेशनिंग। ये वोकेशनड आएगा, ठीक है, पास फॉर्म आएगी।
एंड वोकेशन इन द साउथ ऑफ फ्रांस। तो चले फिर हम आगे चलते हैं, अगला करते हैं हम नेक्स्ट वन। इज दैट क्लियर? तो अगला करते हैं हम, हमारा अगला है साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ has discovered option a type of coral with option B the same characteristics as human bone semicolon its qualities render option C it ideal for option D his replacements and other orthopedic endeavor no error नो एरर, ये है नो एरर। इज दैट क्लियर? तो 5 ऑप्शन है हमारी। इसमें मस्सा फिर वही आ गया, यानी पास फॉर्म डिसाइडेड, अगर सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, वी आर डूइंग आई मीन दैट ऑफ ए 7-1। तो इसमें जो मसला है वो ये है कि साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ, ये आएगा हैव, ठीक है, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन द सब्जेक्ट साइंटिस्ट, और ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसका जो ऑब्जेक्टिव वर्ब है वो प्लूरल में बदलेगा, हैज़ की जगह हैड आएगा, हैज़ की जगह हैव आएगा, हैव प्लूरल। तो सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट्स ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, इट्स ऑब्जेक्ट चेंज इन इफ द सब्जेक्ट इन द प्लूरल इट्स ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू प्लूरल। यहाँ पर सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल ही में बदलेगा, तो हैव आएगा। तो चले फिर हम अगला करते हैं, अगला ये है दिस वन, ठीक हो गया। 8th, the street cars of New Orleans have been option A have been represented in option B literary works as symbol of community, comma, idealism, comma, and dreaming of a greater social position by such notable southern writer as Tennessee Williams and Adora Welty, option E, is that clear? तो हमारा मसला ये है, हमारा ये यहाँ प्रॉब्लम है पैरेललिज्म की। द सब्जेक्ट शुड बी पैरेलल, द सेंटेंस शुड बी पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है तो ये हमारा सेंटेंस सही है। इसमें मसला ये है, ये आप देखिएगा, हम तीसरी लाइन में आएंगे, कम्युनिटी एंड आइडियलिज्म, कम्युनिटी एंड आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, कम्युनिटी एंड आइडियलिज्म बोथ आर नाउन। इज दैट क्लियर? तो पैरेलल स्ट्रक्चर के लिए आगे भी जाके नाउन होना चाहिए, तो लेकिन यह है ड्रीमिंग इज नॉट ए वर्ब, इज नॉट ए नाउन, इट्स अ वर्ब। तो अगर ये कम्युनिटी और आइडियलिज्म के मुताबिक पैरेलल नहीं है तो इट्स इनकरेक्ट। सो सी इज अवर आंसर, सी शुड बी अवर आंसर। और अगला हमारा है 9th। इज दैट क्लियर? 9th, ये 9th, Lawrence likes to entertain his neighbors, is that clear? And invite, option A, them to dinner parties on special occasions, semicolon,
On the other hand, comma, he values B, privacy and relaxation as well, and thus does not wait, does not want to see 1D showing up at the door every night. ई तो अब हमने देखना ये मसला क्या है. मसला फिर वही है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का. यहाँ पर पहली लाइन में है नेबरर्स विच इज़ प्लूरल, ठीक है. और अब डी पे आ जाए. डी में वन इज़ अ सिंगुलर. One has been used as a noun over here, pronoun as over here, but one is also used as an adjective. लेकिन यहाँ पर एज ए प्रोनाउन है तो ये सिंगुलर है. तो नेबर्स इज अ प्लूरल, तो दैट्स वाई डी इज अवर आंसर. डी शुड बी अवर आंसर. तो चले फिर हम अगला करते हैं नंबर 10. नाउ लेट अस मूव नंबर 10. नंबर 10 है shifting nervously and talking quietly. Option B, everyone in the room waited impatiently to discover who she had sent the elaborate gift. Option D. तो हमने इसको गौर से देखा है. इसमें नो एरर, नथिंग एरर लाइज ओवर हियर. तो ई इज़ अवर आंसर. ई शुड बी अवर आंसर. इट्स वेरी सिंपल और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. तो चले फिर हम अगला करते हैं 11th. अब 11th में एक बात याद रखिएगा. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल, बिकॉज एंड सिंस. तो चले हम फिर उसको करते हैं. पहले वाइल, ऑप्शन ए, वी नो लॉन्गर बी लिव सो फार फ्रॉम स्कूल. Option C, we no longer worry about. Option D, missing the bus. No error. Is that clear? तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. तो यहाँ पर मसला ये है, while is used to express duration of time. Again, I'm of the opinion when we use while, it is used for the duration of the time than the reason. Is that clear? So we should replace while instead of because or since. We should try to replace because or since. Again, I'm of the opinion while is used to express duration of time rather than a reason. So we should try to replace while instead of because or since. तो यहाँ बिकॉज आएगा या सिंस आएगा. तो ए इज अवर आंसर. बिकॉज या सिंस वी नो लॉन्गर. इज दैट क्लियर? तो ए इज अवर आंसर. ए शुड बी अवर आंसर. तो चले फिर हम अगला करते हैं 12. तो 12 हम करते हैं 12वां. और क्वाइट, ऑप्शन ए, डिफरेंट from the Yellowstone River. Option B, the canyon of the Colorado River. Or C, is that clear? Famous for their. Option D, soaring, option, comma, majestic walls of burnt, comma, red rock. No error. तो 5 ऑप्शन है हमारे. तो इसमें बी इज अवर आंसर. बी शुड बी अवर आंसर बिकॉज द थिंग इज दैट वी शुड ट्राई टू कंपेयर. Comparison is not parallel. First of all, we should try to have this thing in our mind. Comparison is not parallel. Because the thing is that the comparison, I would like to tell you, the comparison being made is not parallel. Is that clear? The canyon of the Colorado River are compared to the Yellowstone River. Is that clear? But it should be compared to the canyon of the Yellowstone River. So B is our answer. B should be our answer. तो चले फिर हम अगला करते हैं नंबर 13.
Number 13. Is that clear? Now we are doing number 13. Number 13. Is that clear? आफ्टर मैं पूरा ये क्लियर कर दूं ताकि आपको मसला ना बने ये इज आर क्लियर आफ्टर द थिएटर critic gave the experimental play an unjustifiably option A harsh review comma he has been fired from option C the newspaper for failing to keep on open mind option E तो 5 ऑप्शन है हमारे सो वी हैव 5 ऑप्शन इज दैट क्लियर तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है जो सब्जेक्टिव जो टर्म है वो है गेव विच इज़ पास्ट और उसके ऑब्जेक्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ बिन तो जो गलत है तो इन ऑर्डर टू मेक द पैरेलल ऑफ दैट ऑफ द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट when the subject is in that of a plural form its object change according to plural form ठीक है sorry its object change according to past form not plural but past form again I would like to repeat if the subject is in the past form which is gave and if it is in the past form तो आपको बी में चेंजेस करनी है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यानी सब्जेक्ट के मुताबिक आपने चलना है सब्जेक्ट जहाँ पर पास्ट है और यहाँ पर बी में भी पास्ट होना चाहिए तो ये आएगा वाज हैव बीन की जगह वाज बी इज अवर आंसर बी शुड बी अवर आंसर और अगला है नंबर 14 नाउ वी आर डूइंग नंबर 14 इज दैट क्लियर वी आर डूइंग नंबर 14 Number 14. Is that clear? We now know that option A, Archimedes, one of the foremost mathematicians of ancient Greece, devised a method for computing volume that was very similar to Newton, option B, who, option C, developed ऑप्शन डी कैलकुलस ऑप्शन ई तो 5 ऑप्शन है नाउ लेट अस एक्सप्लेन लेट अस एनालाइज हम बी इज अवर आंसर बी शुड बी अवर आंसर बी हमारा आंसर है इस जमन में आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट दैट दिस सेंटेंस इज नॉट पैरेलल इज दैट क्लियर इट कंपेयर्स द मेथड फॉर कंप्यूटिंग वॉल्यूम to the man Newton. Is that clear? But should it compare a method to another method? Another method. Is that clear? In order to be parallel, the underlying part of the sentence would have to say something like was that of Newton like was that of Newton, where that referred to Newton method, where he is trying to refer to Newton method. Is that clear? So, B is our answer. B should be our answer. तो चले फिर हम आखिरी करते हैं लास्ट वन साइंटिस्ट द सन समटाइम द सन shines on the lake. Sometimes the sun shines on the lake in such a fashion, option A, that it creates the illusion. Is that clear? Illusion का यहाँ illusion का मतलब होता है indirect reference. Is that clear? That we could sail, option C, a boat of the edge D of the earth full stop no error E तो यहाँ पर मसला है बी में
इज दैट क्लियर? बी में मसला है, ए डबल एल यू एस आई एन, अल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, लेकिन यहाँ पर आएगा अल्यूजन, आई डबल एल यू एस आई ओ एन, अल्यूजन, जिसका मतलब मिसकंसेप्शन या फॉल्स या थिंग लाइक दैट। तो बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। आखिर में आई वुड लाइक टू address my all students, boys and girls. The problem for the student in Pakistan, they never study thoroughly. I mean, when they are trying to appear in the examination, they work only for 1 or 2 months. But that is not suffice. If they start from the very beginning to the end and utilize their time, one of the most important thing is time. इस ज़माने में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको एक बात सिखाई जाती है, हम यहाँ से सिखा कर उनको भेजते हैं। टाइम प्लेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। इफ़ यू कैन ग्रिप टाइम, यू कैन डू इट। और टाइम को ग्रिप करने के लिए अगर आपके पास 2 साल होते हैं पूरा मास्टर करने के लिए या बीए करने के लिए, तो 2 साल में हम नहीं पढ़ते, हम सिर्फ जो एक आध माह रह जाता है या 2 माह रह जाते हैं उसमें दिन रात एक करते हैं, तो जो कि गलत है। उसमें हमारी ना प्रैक्टिस बनती है, ना फ्यूचर के लिए हम आप तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम रह जाती हैं। मैं इस ज़माने में एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम हमारा एजुकेशनल सिस्टम देख लें कि अगर दुनिया की यूनिवर्सिटियों को देखा जाए, तमाम दुनिया की यूनिवर्सिटियों को देखा जाए, तो पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम ने तालीम को, इसमें टीचर भी ज़िम्मेदार है, ये नहीं कि स्टूडेंट ज़िम्मेदार है, टीचर भी ज़िम्मेदार है। हम अपने काम को पूरे तौर पर नहीं करते। देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ कि 2 साल है आपके लिए, 2 साल बीए के लिए या एमए के लिए या कोई भी आप चीज़ करना चाहिए, आपके पास टाइम होता है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं करते। टैलेंट की कमी नहीं है, कमी ये है कि यू नेवर ट्राई टू रियलाइज योर टाइम। सो टाइम इज़ गोल्ड, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, so you should try to follow the time if you want to get success in your future prospect. This is my message to my all students.